Assalamu alaikum. I'm Ahmed Ali Naqvi and you are watching World in Focus. नाज़रीन, आज के इस एपिसोड में हम पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के एक और एस्पेक्ट पे बात करेंगे विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज़ हाउ कैन पाकिस्तान बैलेंस इट्स रिलेशनशिप बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना. This has been a general debate in Pakistan for so many years. However, this debate is more relevant because Donald Trump is going to take oath as the US president tomorrow. और कल वो जब प्रेसिडेंट बन जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है अंडर हिज प्रेसिडेंटशिप it is likely that US-China conflict will escalate mainly because of so many factors, because he has a China hawkish cabinet, because of his threats to impose tariffs on China, TikTok ban की बात हो रही है. So there are so many different ways in which US-China rivalry is likely to escalate. And among other impacts that it will have is on Pakistan's foreign policy. And Pakistan के अंदर जो debate है that what kind of relationship that Pakistan should pursue with the United States and China, और उसकी rivalry में पाकिस्तान के लिए क्या options हो सकते हैं, इस तमाम इशू के ऊपर हम आज के इस एपिसोड में बात करेंगे. हम broadly speaking 3-4 मेन पॉइंट पे बात करेंगे. सबसे पहले तो हम हिस्टोरिकल पाकिस्तान का जो रिलेशनशिप US और चाइना पे है उसकी बात करेंगे. बिसाइड दैट हम देखेंगे US और चाइना का पाकिस्तान पे लेवरेज क्या है दोनों का, और उसके बाद हम देखेंगे पाकिस्तान के पास चॉइसेस कौन सी हैं, मल्टीपल ऑप्शंस क्या हैं, हर ऑप्शन की प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, और फिर पाकिस्तान ने जब डिसीजन करना है तो वो कौन सा डिसीजन होगा इन चॉइसेस में से, और उस चॉइस जो हम बना सकते हैं मेरी सजेशन क्या होगी, मेरा ओपिनियन क्या होगा उसके बारे में, और उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या होंगे. ये तमाम मामलात ऐसे हैं जिनके ऊपर हम आज की एपिसोड में बात करेंगे. तो सबसे पहले नाज़रीन शुरू करूँ, अगर मैं हिस्टोरिकल बात करूँ तो पाकिस्तान के जो रिलेशनशिप हैं हिस्टोरिकली यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना को अगर मैं कंपैरेटिव व्यू में देखूं तो एक स्ट्राइकिंग डिफरेंस जो पाकिस्तान के रिलेशनशिप में नजर आएगा US और चाइना में, वो कंसिस्टेंसी ऑफ रिलेशनशिप है, वो कंटिन्यूटी ऑफ नेचर ऑफ रिलेशनशिप है. यूनाइटेड स्टेट्स के साथ हमारे रिलेशनशिप लार्जली हैज़ बीन ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप. जिस तरह कुछ दिन पहले US जो स्टेट डिपार्टमेंट है उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ US का कोई फॉर्मल ट्रीटी नहीं है, विच मीन्स दैट पाकिस्तान इज़ नॉट अ फॉर्मल एलाई ऑल्दो इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग पार्टनर. But with China, we have a consistent relationships. We have treaties and agreements with them. So in that context, China has been a stable partnership for Pakistan, a trustworthy partnership, and that's why we call China as all-weather friendly relationship. On the contrary, हमारा जो US के साथ रिलेशनशिप रहा है that has been largely transactional. स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट डेवलप होते हैं तो ये रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है, जब स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट US के कम होते हैं तो रिलेशनशिप ब्रेक डाउन कर जाता है. एंड दैट्स व्हाई वी कॉल चाइना रिलेशनशिप विद द यूनाइटेड स्टेट्स एज फेयर वेदर एज अपोज टू द ऑल वेदर रिलेशनशिप दैट वी हैड विद चाइना. So in that context, I'm not saying that US is not worth anything. Yes, when US was in alliance with Pakistan, Pakistan got a lot of benefits from the United States. China के साथ भी हमारी एक steady improvement of relationship रहा है हिस्टोरिकली भी और अभी मौजूद है. तो एक in that context बड़ा important relationship है. Besides that, अगर मैं बात करूँ तो चाइना और US के साथ एक और जो striking difference है, it is the cultural aspect. With the United States, it has largely been the government-to-government interactions, and popular narrative has not been pro-US historically in Pakistan. As opposed to that, with China, the popular narrative is largely in favor of China. Despite having some issues in Balochistan and other places, China has been trusted by the people of Pakistan as an important and trustworthy ally. And in that context, जो popular base और foundation है Pakistan-China relationship की, it is stronger than Pakistan's relationship with the United States historically. थर्ड एंड लास्ट, हिस्टोरिकली यूनाइटेड स्टेट्स की जो रिलेशनशिप पाकिस्तान के साथ मिलिट्री रिलेशनशिप रहा है दैट हैज़ लार्जली बीन सेलर एंड बायर. यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ ईदर प्रोवाइडेड एड टू पाकिस्तान और हैज़ सब्सिडाइज्ड एंड सोल्ड वेपन्स टू पाकिस्तान. China, on the other hand, is developing Pakistan's military industrial complex, and in that context, हमने देखा कि China has invested in, strengthening Pakistan's capabilities to develop its own arsenal and its own weapons, including GF-17 iconic है, इस तरीके से और बहुत से Al-Khalid है, HIT है, HMC है. There are so many other kind of collaboration that China had with Pakistan, जिससे पाकिस्तान चाइना की जो रिलेशनशिप की डेप्थ है उसका अंदाज़ा होता है. सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट हमारी हिस्ट्री ऑफ रिलेशनशिप तो दोनों के साथ रही है, दोनों के साथ हमारी पार्टनरशिप रही है, बट यूनाइटेड स्टेट के साथ एक इनकन्सिस्टेंट. विद चाइना वी हैव अ कंसिस्टेंट रिलेशनशिप एज सच. But having said this thing, that does not mean that United States is not important for Pakistan historically or current times.
अब आते नाज़रीन, जो करंट US चाइना राइवलरी है इस पर हम ऑब्वियसली लेटर ऑन एक प्रोग्राम भी पूरा करेंगे और ख़ासकर अंडर ट्रंप क्या राइवलरी बन सकती है उस पर बात करेंगे। बट ट्रंप के दौर में जो US चाइना राइवलरी है वो सिग्निफिकेंटली एस्केलेट होगी, एंड इन दिस एस्केलेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बोथ पार्टीज आर इन सर्च ऑफ मेकिंग अलायंसेस। यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ बीन ट्राइंग टू मेक डिफरेंट अलायंसेस, इंडो पैसिफिक के अंदर हो या ग्लोबल हो। China, on the other hand, is also trying to develop its alliances and formalize its alliances in the region and globally. और इस कॉन्टेक्स्ट में ये जो पॉलिटिक्स ऑफ अलायंसेज है इसमें वेयर शुड पाकिस्तान स्टैंड। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी जो डिसीजन मेकर्स हैं दे आल्सो फेस द सेम डायलेमा, बिकॉज पाकिस्तान के ऊपर लेवरेज है दोनों स्टेट्स का और उसकी वजह से पाकिस्तान के लिए एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी डिसीजन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज़ द US लेवरेज ओवर पाकिस्तान। अगर मैं यूनाइटेड स्टेट्स की बात करूँ नाज़रीन, तो यूनाइटेड स्टेट्स इज़ सिग्निफिकेंटली इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी, और ख़ासकर मैं अगर ट्रेड की बात करूँ तो US इज़ द लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन ऑफ पाकिस्तान। अराउंड $6 बिलियन की हमारी एक्सपोर्ट जाती है US के साथ, एंड US के साथ जो ट्रेड सरप्लस है हमारा दैट इज़ अराउंड मोर देन $3 बिलियन विच इज़ एक्सट्रीमली वाइटल एंड इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान इकोनॉमी बिकॉज वी फेस अ सिग्निफिकेंट एंड इंपॉर्टेंट balance of payment crisis. Besides that, US is also an important economic partner in terms of support at multilateral institutions like IMF, like World Bank. United States की सपोर्ट के बगैर शायद IMF और World Bank से पाकिस्तान के लिए सपोर्ट का मिलना शायद मुमकिन ना हो, and Pakistan's perpetual dependence on IMF and World Bank indirectly makes Pakistan dependent on the United States, and it gives US the leverage to manipulate Pakistan's decisions. Besides that, अगर मैं बात करूँ नाज़रीन पॉलिटिकल बात करूँ तो ऑब्वियसली दैट द यूनाइटेड स्टेट्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल एक्टर, नॉट जस्ट फॉर पाकिस्तान बट ग्लोबली। पाकिस्तान के लिए इसलिए ज़रूरी है बिकॉज हिस्टोरिकली हमारा जब भी इंडिया से कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट हुआ है उस कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेशन में द यूनाइटेड स्टेट्स हैड एक्टेड एज अ मीडिएटर एंड कन्विंस्ड एंड प्रेशराइज इंडिया नॉट टू एस्केलेट द कॉन्फ्लिक्ट विद पाकिस्तान। और उस कॉन्टेक्स्ट में यूनाइटेड स्टेट्स का जो रोल है एज अ मीडिएटर बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, इट हैज़ एन एस्टेब्लिश्ड रोल एंड इट इज़ ओनली द US that can play this role. No other state has the capability and the will to play the role of a mediator in a conflict like Pakistan and India's. So ये तो एक मेजर काइंड ऑफ लेवरेज जो यूनाइटेड स्टेट्स का है पाकिस्तान के ऊपर उसकी बात की जा रही है। ऑब्वियसली बात एक लिमिटेड सिक्योरिटी लेवरेज भी रहा है US का पाकिस्तान के ऊपर, नॉट मच रिसेंटली बट स्टिल इट इज़ देयर। अब आते हैं चाइना के ऊपर। चाइना हैज़ आल्सो अ मेजर इंपॉर्टेंट लेवरेज ओवर पाकिस्तान, और जो सबसे बड़ा लेवरेज है चाइना का वो इकोनॉमिक है। मोर देन $25 बिलियन जो हैं वो पाकिस्तान के जो लोन्स हैं वो चाइना से हैं, including those that we have kept in our reserves, और चाइना उसको रोल ओवर करता रहा है। Beside that, China is the largest trading partner of Pakistan, although trade deficit है but around $17 बिलियन से ज़्यादा की जो ट्रेड है पाकिस्तान चाइना में होती है। Besides that, China is a source of cheaper goods to Pakistan. फिर सबसे इम्पोर्टेंट बात, China has invested in Pakistan's military, और ख़ासकर मिलिट्री ट्रेनिंग हो, चाहे वो मिलिट्री एक्सरसाइजेज हों, काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइजेज हों, अमन नेवल एक्सरसाइजेज हों। चाइना हैज़ बीन एन इंपॉर्टेंट एंड रिलायबल पार्टनर, एंड उसकी बेस्ट एग्जांपल जो है वो हमारे पास रिसेंटली जो हमने J-10C लिया उनसे, दैट्स जस्ट वन ऑफ द एग्जांपल्स। बिसाइड दैट, चाइना आल्सो हेल्प पाकिस्तान डेवलप इट्स ओन indigenous military industrial complex that is not only providing a security assistance to Pakistan but also provides kind of एक डिफेंस के वास्ते ऑटोनॉमी जो है वो पाकिस्तान को प्रोवाइड करता है। Besides that, China has been an important partner on political issues, चाहे कश्मीर का इशू हो, चाहे वो टेररिज्म का इशू हो, अफगानिस्तान का इशू हो। China has proactively participated in support of Pakistan, and it has helped Pakistan on matters related to internal and external affairs. So चाइना के बगैर शायद पाकिस्तान की इकोनॉमी, सिक्योरिटी जो है और इवन अब जो इन्वेस्टमेंट वगैरह भी आती है, दैट इज़ लाइकली टू बिकम नेग्लिजिबल इफ़ चाइना डिसाइड नॉट टू बी क्लोज टू पाकिस्तान। सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट पाकिस्तान के ऊपर लेवरेज यूनाइटेड स्टेट्स का भी है, चाइना का भी है। अब इस पॉइंट पर नाज़रीन पाकिस्तान के लिए क्या ऑप्शन हैं? Generally speaking, there are 3 options that are presented: siding with the United States, siding with China, and third one is the option of neutrality. नाज़रीन, अगर मैं वन बाय वन बात करूँ तो यूनाइटेड स्टेट्स के साथ हमारा जो अलायंस सिस्टम है, इफ़ वी डिसाइड टू जॉइन द यूनाइटेड स्टेट्स ब्लॉक, although I personally believe that US does not need Pakistan as such, the way they need India and other states to contain China. But hypothetically, if we choose United States as a kind of state जिसके साथ हम अपने प्रेफर करेंगे to have a relationship at the cost of our relationship with the Chinese, obviously बात है, this is something that is likely to bring some benefit and opportunities like economy, like technology, like West के साथ orientation, like political benefits, but at the same time it will also bring costs. And the biggest cost is how much we can rely on the United States. History tells us US is not a historical reliable partner. Besides that, जो दूसरा important challenge होगा, that is the perception in Pakistan that US largely abandoned Pakistan when Pakistan needed the US the most after
2021. Having said this thing, it is less likely that Pakistan would make such a choice. हमारे लिए उस रियलिटी के साथ जो है ये डिसीजन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, we know that United States को as a partner choose करने का मतलब होगा we are adding one another foe in our neighborhood. India is already rival. अफगानिस्तान से भी हमारे इशूज़ चल रहे हैं, ईरान एंड चाइना बच गए हैं और उसमें ईरान से भी अटैक हुए पाकिस्तान में. बट चाइना को अगर हम लूज़ करते हैं फॉर द सेक ऑफ यूएस, दिस विल बी समथिंग दैट विल बी अ काइंड ऑफ self attack. It will mean the suicide on the part of Pakistan. Second option is choosing the Chinese over the US. But again, this is likely to bring some benefits as well as some challenges and threats to Pakistan. I would rather go कि अगर opportunities की बात करूँ तो शायद opportunities कोई ज़्यादा escalate तो ना हो because China is already investing in Pakistan, trading with Pakistan and other places. But definitely इसका जो दूसरा aspect है which is the fact that जो चाइना के साथ क्लोज पार्टनरशिप वुड आल्सो मीन द एलिनेशन विद द यूनाइटेड स्टेट्स एंड वेस्ट की एलिनेशन का मतलब है कि जो ग्लोबल IFIs वगैरह हैं उनके ऊपर हमारी जो डिपेंडेंसी है दैट इज़ लाइकली टू बी मैनिपुलेटेड बाय द वेस्ट एंड दैट इज़ गोइंग टू हार्म पाकिस्तान इंटरेस्ट सिग्निफिकेंटली. अब आते नज़ीन इस पॉइंट के ऊपर कि जो न्यूट्रलिटी का ऑप्शन है, जनरली स्पीकिंग पाकिस्तान की जो कंडीशंस हैं कंसिडरिंग पाकिस्तान इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी, कंसिडरिंग पाकिस्तान पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी, डज पाकिस्तान हैव the capability to make a choice? I don't think so. Pakistan has the kind of condition in which we can side with one and go against another one. This is something that is likely to be unafforded by Pakistan. Pakistan की history भी ये कहती है that taking sides has harmed Pakistan's interest more than it benefited. Therefore, इस condition में भी for a safe side, Pakistan के लिए ideal situation would be that Pakistan stays neutral. However, neutrality is always questioned when the escalation takes place between the two rivals. So under Trump, if US-China rivalry escalate करती है तो पाकिस्तान के लिए न्यूट्रलिटी रखना that is likely to be difficult. But that's where the leaders matter. As a part of the leadership theory, it is generally believed a leader has to take decisions that nobody else can and nobody else can think of. And that's why I believe that the political leadership of Pakistan needs to be well aware of the emerging challenges that Pakistan might face, and therefore they need to make a smart choice. Why Pakistan can't be neutral? Because obviously बात है पाकिस्तान की डिपेंडेंस US पे भी है और चाइनीज़ पे भी है, and that is something that makes Pakistan vulnerable to the influence by both states. But क्या नाज़रीन ये जो हम चॉइसेस की बात कर रहे हैं, is US interested in making Pakistan an ally? Is China interested in taking Pakistan as an ally against the United States? मेरा नहीं ख्याल इस कॉन्फ्लिक्ट में particularly जो Chinese are interested in making alliances in a way that the states are friend to China and become hostile to US. This is not something that China has been trying to do in the last few years, something that West largely misunderstood. So the Chinese policy है that you can stay part of China, you can stay part of the United States alliance, and let's be part of both the alliance systems. They have no objection to that. क्वाड के अंदर स्टेट जो हैं वही आप जानते होंगे G7 के अंदर भी मौजूद हैं, वही स्टेट जो हैं वो SCO के अंदर भी उनसे मौजूद हैं और ब्रिक्स के अंदर भी मौजूद हैं. So there are states that are navigating on both sides and China has no objections to that as such. China in fact welcomed India despite the fact that India was part of the Quad, but India को welcome किया गया in the SCO. अच्छा, सेकंड पॉइंट नाज़रीन अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान के लिए क्या यूनाइटेड स्टेट्स इज़ इंटरेस्टेड इन मेकिंग अलायंसेस विद पाकिस्तान अगेंस्ट चाइना? US is definitely in search of alliances to contain China, but Pakistan's geographical position is not ideal for the US support to contain China. And for that matter, the United States might need Japan and Korea more than they need Pakistan because of peculiar economic geography that Pakistan has vis-a-vis the Chinese. So in that context, नाज़रीन मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर भी बिल्ड किया जाएगा to make a choice between the two, but definitely Pakistan would like not to, if not appease someone, not annoy others, ताकि पाकिस्तान के जो मसाइल हैं इकनॉमिक और सिक्योरिटी मसाइल हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाएं. So to conclude, नाज़रीन हम कह सकते हैं that the escalation of rivalry between US and China is likely to create not just opportunities but also threats to Pakistan. Pakistan's policymakers, considering what has been the best practices of the neighboring states and important friends of Pakistan, and considering the kind of Pakistan's economic and political and security vulnerability, Pakistan needs to make sure that it tries to either balance its relationship with the United States and China, or it needs to try to isolate itself from both of them for a short period of time in order to make sure that Pakistan does not lose either of them, as either of them and both of them are the lifeline to Pakistan's economy and security. Thank you so much, Nazin, for watching this program. Kindly like this video, share it, and subscribe this channel. Allah Hafiz.